गुड इवनिंग नमस्कार आज अणानबेतम मार्गदर्शन कार्यक्रम को महाशक्ति फाउंडेशन परिवार तरफ आपण मान हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज आमर जो अणानबेतम मार्गदर्शन कार्यक्रम को फैसिलिटेट करेंगे आमर शाश्वत पट्टनायक सर जे कि गोटे मल्टीनेशनल कंपनी स्ट्राइकर एआई इंजीनियर अच्छा एवं आज कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करेंगे एवं मॉडरेट करेंगे। मु अनुरोध करी आमर मॉडरेटर जे कोऑर्डिनेट करेंगे कार्यक्रम को सुश्री सुश्रित रथ मैडम हेड पीआर एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ महाशक्ति फाउंडेशन। ओवर टू यू सुश्रित। Thank you so much, sir. And before starting, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜର ଅନ୍ କରିପାରିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରିବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଫାସିଲିଟେଟରଙ୍କୁ ବି ସେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜର ଅନ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। Thank you. So, good evening, everyone, and a very warm welcome to this insightful session. It's a very fascinating topic, Ajira Date, and Ajira webinar is on understanding artificial intelligence concepts, applications, and its everyday impact. So, ଆଜିର जो ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଭଲ୍ଭ କରୁଛି faster than even ଆମ ସୋଚ୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବାହାରୁଛି କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେ ଆମର ମନ ଠାରୁ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ସେଇ ସ୍ପିଡ୍ ଧରି ସାରିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଏଆଇ ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆମ ପାଇଁ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଆମର ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଜାଣୁନେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନେ ବୋଲି ବଟ୍ ଆମେ ନ ଜାଣିକି ବି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଟ୍ୱିଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ୟୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଇଠି ବି ଏଆଇ କାମ କରୁଛି। ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଇଠି ବି ଏଆଇ କାମ କରୁଛି। ତ ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଆ ଭେରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ। And to help us understand this very evolving topic, we have with us Shashwat Pattanayak. So he's an AI engineer, Sir Jimti Kahile, and he's an expert in AI applications and technology from Strikers Global. So he will walk us through what AI actually is and what it exactly does, and our life re kona tara impact porchi, its history, its usage, everything. So over to you, Shashwat. थैंक यू धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल। शुभ संध्या। केमिति अछंती समस्ते? Very good, sir. गुड। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो मो स्क्रीन शेयर करके आज कार्यक्रम को आरंभ करी। आपण मानकर जहार भी जहाँ डाउट्स रहबा प्लीज नोट डाउन करंतु हमें शाश्वत सेशन दे सारला परे वी विल ओपन द फील्ड आपण मानकर जहाँ भी क्वेश्चंस थिबो यू कैन शूट। जस्ट अ सेकंड। ओके मैं आशा करुच्ची मो स्क्रीन टी शेयर होती एंड आप समस्त को देखा जाऊ कि ना स्क्रीन रे धीरे धीरे आसब। Again, good evening everyone. So first of all, I will congratulate the Mahashakti team for making it to the 89th episode of Margadarshan program. You are doing really great both. So in today's episode, we will understand the artificial intelligence, its concepts, applications and everyday impact. So by the end,
you will see how AI already helping us every day, where it's heading in the future, and how we can use it responsibly. So आजिकार सेशन रे हम डिस्कस करिबा AI विषय जोटा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम। तो ऑलरेडी आमे जना तो जानी कि या फिर न जानी कि बहुत जगह आम AI यूज करूँ जोटा कि आम जानिनु, बट आम मु तो आशा करुच्ची समस्ते ही आजिकल दुनिया रे किछि ना किछि माध्यम रे AI यूज करूचंती। तो वी विल स्टार्ट विथ द company's vision, mission and core values. So the company's vision is Mahashakti Foundation visualizes an egalitarian society of justice, economic independence, empowerment and peace. The mission is to organize the poor, build up their capacities and provide them with access to relevant sustainable livelihood development services with dignity and transparency. So the core values include teamwork, honesty, empathy, courage, punctuality, excellence, communication and transparency. So ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କିଏ ଇଏ ସାନ ପିଲା ଭଳିଆ ଦୁସୁଛି ଆସିକି ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ସାନ ପିଲା ବିଷୟରେ। So ମୋ ନାଁ ହେଉଛି Shashwat Pattanayak. I am Shashwat Pattanayak. I now work as an AI engineer at Stryker Global. I am working now in Bangalore. So I have completed my masters in computer science with specialization in artificial intelligence and machine learning. I completed my masters from Vellore Institute of Technology, commonly known as VIT. And these are my competent skills, those who understand tech. So these skills help us to develop softwares, programs, websites and other technologies in day-to-day life. My hobbies include traveling, adventure activities, hikes, drives, bike rides. I love to capture moments and I do a lot of blogs. I love to play sports and games. I enjoy reading books and podcasts. सो जो मैंने मो संगे ऑलरेडी कनेक्टेड अच्छा सोशल मीडिया हैंडल्स रे से माने तो बहुत भला भाव जानते कि लाइक मु बहुत बुलवा पसंद करे। तो ये किछटा पिक्चर्स अच्छी जोटा कि मो फैमिली, माय फादर जुगल किशोर पटनायक, माय मदर सोदामिनी महांती एंड माय सिस्टर संस्कृति. सो today I am really excited to explore artificial intelligence, that is simply called AI. तो ए सेशन सारा मु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बारंबार न कहीकि ताकू AI कहबी मु. ओके, सो आमे आज कौन शिखिबा, कौन कवर करिबा, व्हाट वी विल कवर टुडे. So today we will see what AI really is, where it came from, how it works, and most importantly how it is already helping us and sometimes also challenging us in our day-to-day life and work. So आज आम बुझा AI कौन, AI रो को टेक्नोलोजी रे से काम करे, आम रियल लाइफ रे AI को केमिति यूज करि परिबा या फिर केमिति यूज करि आसुछु, आम AI को केमिति आम पर्सनल डेवलपमेंट आ टीम रो प्रोडक्टिविटी बढ़ावा पई यूज करि परिबा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज आम AI को रेस्पॉन्सिबली केमिति यूज करि परिबा, ठीक भाव में केमिति यूज करि परिबा. चलो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. सो when you hear the word AI, artificial intelligence, anything, you must be hearing it from a long time. So what comes into your mind? Like maybe whatever thought you have, you can just share. Like I want to know, like ଯେତେବେଳେ ଆପଣ AI ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣନ୍ତି या फिर ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସେ, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ଭାବିକି ରଖିଛନ୍ତି? सो आपण आंसर दे पारिबे, आपनको भूल आंसर पाई आपनको पनिशमेंट दिया जीवनी. केही भी आंसर दियंतु. Now everybody is using chat GPT, तो एटलीस्ट आपण कोन जानि छंती AI विषय केही तो कोन तो. AI basically it just substitute and reduce the human resources. Good, yes. It you act like a computer. Sorry, again, आउथरे कोन तो. A computer भले काम करे. लाइक मोर लाइक ए स्मार्ट कंप्यूटर, राइट. कहीं ना आगुरु जो कंप्यूटर माने थिबे से माने गोटे तांकु फिक्स्ड सॉफ्टवेयर, फिक्स्ड प्रोग्राम रे डेवलप कराइला एंड से माने से फिक्स्ड काम ही करि आस्तले.
जमती आगु आम बहुत कमनली यूज करचे लैपटॉप्स आमर है डेस्कटॉप है ऑफिस आम यूज करचे एक्सेल यूज करचे वर्ड यूज करचे पावर पॉइंट यूज करचे तो से कौन से गोटे फिक्स कम बनाई एक्सेल आम डाटा नंबर्स सब जिन टेबुलर फॉर्म रखिपर वर्ड रे आम टेक्स्ट फॉर्म इमेज सब स्टोर कर सो से गोटे फिक्स्ड पर्पस था ताठू अधिक कर बट AI you can think it of as a smart software that can learn and evolve with data and it can mimic human tasks like so you can think of it as a smart software that can learn by itself, that can learn with the help of data, that we can learn by how we interact with it. For example जदि आपणक आपण बहुत जन आजिकल कुकुर बिले बहुत पेट्स भी पालुंट बहुत जिनस या फिर आपण पड़ोसी गाँव में बहुत जन आखपाखे भी रोथे बहुत जन एमती पेट रखुवे तो से केमती आपण सागर इंटरेक्ट कर आपन शिखती जमती आप सपोज गोटे शुआ रखिंट आप ट्रेन करेंगे किसी दिन पर सी आप जहाँ कहे सी रिपीट कर तो सी जमी ट्रेन हो तो AI भी से भाया किसी गोटे जिनस यूज कर ट्रेन कर डाटा थ्रू ट्रेन कर एंड सी दिन को दिन बेटर हो जाऊँ सो दैट्स AI so it learns from data and recognizes patterns and the software the smart software it tries to mimic human intelligence so our intelligence is now the most advanced so ये जो AI रो आइडिया सेटा आम इंटेलिजेंस को कॉपी करने को ट्राई कर इट्स ट्राइंग कि सी केमी आम भाया भाभी पार कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक दे कैन नॉट डिसाइड आम जमती रूल दीचु सेमती करेंगे बट AI कैन डिसाइड सो AI इट्स लाइक जो ह्यूमन इंटेलिजेंस अच्छी आम जमती भाभी पार्चु आम जमती डिसीजन नहीं पार्चु सेमती ही सी शिखा चेष्टा करे सी पैटर्न्स नोटिस करे सी भी निजे डिसीजन्स नहीं पारे बट एति फरक आमर जो इंटेलिजेंस अच्छी से आम ब्रेन रे रन हुए आम ब्रेन भीतर चले एंड AI जो अच्छी से जो सिलिकॉन चिप्स था जोटा कि सबू कंप्यूटर्स सबू जो प्रोसेसिंग सिस्टम से लगे तो AI से रन हुए दैट्स वाई इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोटे एग्जांपल देवी आप बहुत जन आजिकल दुनिया रे याड सियाड तो कम्यूट करुवे तो आप गूगल मैप्स यूज करेंगे बहुत टाइम सपोज आप जाना रास्ता जावाक तो बहुत फ्रिक्वेंटली आम गूगल मैप्स यूज करूँ तो गूगल मैप्स मानकर आप गोटे सहर भितर सपोज भुवनेश्वर सहर भितर अच्छा आप गूगल मैप्स यूज कर तो सी आपको मल्टीपल्स रास्ता माने गोटे ही रास्ता ना सी 2-3 रास्ता देखेब बट आपन को ए रास्ता जावाक कहब से डिसाइड करी कहब कि एटा सबुठु शॉर्टेस्ट रास्ता एंड एते ट्रैफिक सबुठु कम अच्छी तो यू कैन गो इन दिस वे so that's how AI can analyze it can decide within very short period of time so the idea of AI is getting popularized now but the AI is not that new AI dates back to 1950 so in 1950 Alan Turing is a scientist he had in his mind like can machines think because as of that period machines cannot think they just operated on rule basis तो 1956 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड फर्स्ट यूज कराला जॉन मैककार्थी बल्कि जड़े साइंटिस्ट अच्छा द्वारा सो इन 1956 जॉन मैककार्थी फर्स्ट यूज द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 41 years later IBM's Deep Blue so Deep Blue is an AI model is an AI so it beat the world chess championship Gary से 1997 रे जो वर्ल्ड चेस चैंपियन थे गेरी तांको डीप ब्लू जाकि संग कम्पीट करी हरई पारला तो से धीरे धीरे से डेवलप हो सारा तक देन इन 2012 the deep learning models got very good at recognizing pictures so there came the concept of CCTVs that you might be witnessing that automatically charge fine or traffic channels on the roads तो आपने नोटिस करते बहुत जगह आजिकल CCTV लगाई गलानी से कौन कर बस फोटो द्वारा आपन को एक्टिविटी को एनालाइज कर पार्छंती एंड ठीक से हिसाब से पेनाल्टी या फिर किसी भी से हिसाब से एक्शन नौचंती सेटा हूँ डीप लर्निंग जहाँ कहते डीप लर्निंग तो एंड नाउ इन 2022
ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଲା AI ଉପରେ। ତ in 2022 ଚାଟ୍ ଜିପିଟି brought AI to the public. You can use it for free and from anywhere. बस तुमको गोटे इंटरनेट कनेक्शन दरकार आउ तुमको गोटे डिवाइस दरकार एंड यू कैन यूज AI. सो टॉकिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ AI माने AI रो भी किछटा फेजेस अच्छी जमती स्टार्टिंग फेज मिडिल फेज सो सेमती टाइप तो AI रो तीनटा लेवल अच्छे. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ AI: नैरो, जनरल एंड सुपर. नैरो मीन्स द स्टार्टिंग फेज, जनरल मीन्स जेतोले AI is doing like as capable as like humans. Super mane better than humans. So here I will ask one more question: what level do you think we are currently in? तो आपन कौन लागू से एबे जो AI अच्छी एमती आपन डेली देखुथिबे चैट जीपीटी या फिर बहुत सारा AI को विंडोज को पायलट गूगल जेमिनी से माने ए सब जिनस को लेवल रसंती. Basically, Chat GPT, suppose someone is searching for through Google, is getting some information, but Chat GPT is some advanced level. Now, Advanced level. Google is abolished and Chat GPT is advanced level. Suppose a student is studying in any colleges, okay, whatever the materials, anything, the books, Yeah. instead of books, he's searching the entire thing from the Chat GPT, preparing the everything. So AI basically it is substitute the human resources mindset. But whatever we observe, because AI is already established on finance industry, our stock exchanges, Yeah. it has been AI based, right? Yeah. And when people are searching to invest money in shares, stocks, that has been automatically updated in their system every time, right? Yes. But whatever the human resources are, finalize the process function to establish the software in AI, but it is the fixes cannot take any decision beyond the technicals, Okay. the As of now, technologies. yes. But things are upgraded, right? Suppose I want to prepare one content PPT, a presentation. I asked to AI, so AI has designed everything. It's basically in India. It might be because today there are a lot of difficulties about the employment in industry. Yes. When AI comes to many sectors, it reduces the human resources values or human resources. A lot of people getting unemployment. They don't need people because AI can operate from Mumbai office or Singapore, their server established, anything. It's a very difficult taxes coming for India because when technology, when Microsoft people are came to Bangalore for a presentation of AI, okay, so there has been a very difficult for people to get into their income level. Yeah, it's okay, but it's substitute means a lot of people are unemployed tomorrow. Yes, I agree. So That is like if getting we my talk, point. okay. So if we talk about the levels of AI that I was asking, so now we are in the narrow level. तो आपण भाबुथिबे लाइक एबे आमे जदि नेरो रे अछु तो आगु को आउरी केते कोन हे पारे. तो यस, आगु को आउरी बहुत किछि हबो. So most AI that you witness now is on the narrow level, on just this level 1. So they are just expert at one job but not in all. Now comes the next level that we are working on, that we are researching and working on. That's the general AI. So it would match humans at many tasks. So see human bhaliya pura kamo kari paribo. Like it's still in a research phase, but I hope we will achieve it soon. And the next level, that the topmost level, is the super AI. So which would exceed us, like which is more smarter than humans. So that's still a theory as of now, because human intelligence is really at a very high level as of now. But you can watch these examples of super AI if you watch movies, if you watch series. There they just picturize this super AI like they will be doing many things better than humans. Yeah, that's just a myth as of now. You can just enjoy it in movies. Now let's get a overview of how AI learns things. So the basic element of AI is data. Data, it can be anything. It can be data of history, it can be data of finance, it can be medical data, it can be data of users, it can be population data of. So it takes in like any data,
it uses and it tries to learn from it. So then, to simplify this, I will take an example of cooking, because ଆମର इंडियन हाउस होल्ड्स रे बहुत जन आम निजे निजे रोसे करूँ तो बहुत जन फैमिलियर थे कुकिंग टू। तो जो आप रोसे करवा आरंभ करेंगे आपण पनीपरिया जाके आने फास्ट पनीपरिया मसला जहाँ सब दरकार मत से रोसे जना ना तो मुझे जी ओवरव्यू कहूँ। तो जो आप जो पनीपरिया जो आने से हूँ आप डाटा। तो दैट्स द बेसिक थिंग फास्ट जोटा कि आम आने तापर आप गोटे रेसिपी फॉलो करेंगे। सपोज आज डाली बनैबी एटा आनबी ए मसला पकेबी एत समय ताकू बसैबी एतटा प्रेसर रे सेतिकी हुइसिल बाजिला पर ताकू काटबी से जो रेसिपी फॉलो करथिबे सेटा होची एल्गोरिदम। ए जो एल्गोरिदम पार्ट एटा एआई इंजीनियर्स माने डिजाइन करंती डेवलप करंती। तो एल्गोरिदम इट्स ए प्रोग्राम दैट विल हेल्प एआई टू लर्न टू improve itself from the data। तो एल्गोरिदम को यूज करके से डाटा टू लर्न करिबो। फिर जेतेबेले से डाटा एल्गोरिदम काम माने प्रोसेस होला पर जेतेबेले जो मॉडल गोटे बाहरिबो जेमती आपण रोसई सरला पर आपण गोटे बनुची मन को डाली बनिला सेटा गोटे फिनिश डिश सेटा गोटे एंड प्रोडक्ट। तो सेमती एआई रो गोटे एंड प्रोडक्ट होची मॉडल एआई मॉडल जोटा कि से एल्गोरिदम रन है कि डाटा ऊपर से ए मॉडलटी बनिबो। फिर जिते आप डाली बनला फिर आप चाखिबे ना ताकू आमर तो इंडियंस माने बहुत चूजी अरे लुण कमी जाइए राग बेसी जाइए आज है फिटिगला काली हम। तो सेमती ही एआई मॉडल है पर भी आम कौन करूँ ताकू टेस्ट करूँ से ठीक ठाक आंसर दौनी आउ थे ट्रेन कर। तो सेटा प्रोसेसटा चली चले 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 जिते सी आमर डिजायर्ड लाइक से रिफाइंड आंसर ताठू न मिलूँ से आइटरेशनटा चलो 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 फिर गोटे पॉइंट रे से सेतिकी भलसे लर्न कर जीवो कि से जोटा डिजायर्ड आंसर से आमको दे देबो। सो इफ यू थिंक ऑफ इट एज ए कुकिंग रेसिपी डाटा आर द इंग्रेडिएंट्स द एल्गोरिदम्स आर द कुकिंग मेथड। सो द ट्रेनिंग इज द कुकिंग फेज द मॉडल इज द फिनिश्ड डिश एंड इन्फ्रेंस इज सर्विंग इट अप लाइक सर्विंग द डिश। Moving on to the next. Now let's discuss everyday AI around us। आमे AI आम चारिडे अच्छे बट बहुत जिनस आम फिगर आउट कर बहुत जिनस जापारे कि अच्छा या पचर भी AI अच्छे। फॉर एग्जांपल वॉइस असिस्टेंट्स चैट जीपीटी स्मार्ट एप्स चैटबॉट्स लाइक व्हेन यू से हे सिरी और हे गूगल। सो देखो मु हे गूगल कहली माय असिस्टेंट गॉट एक्टिवेटेड like they are so fast at recognizing things। Okay, so when you use this, these are all AI things working for you। When you use Google Maps, they will show you real-time traffic, that's AI। When you receive movie suggestions on Netflix, that's the AI prediction working for you। When you watch YouTube, that's to AI। So your Google Assistant helps you set an alarm, set reminders, that's the speech recognition feature of AI। And yes, Srinandan, you can go ahead। Can AI ever overcome the human emotions? Ever? Human emotions, yeah, human emotions, right? So there is a specific domain of AI that is NLP, and within NLP we are trying to develop emotional intelligence। So now That is foremost made by humans, right? yes, made by human। That can machines can never overtake humans, right? That's what we think now। Before You 10 think, years or right? before But there is always a issue with machines and humans, right? Emotions cannot be compensated or comparative with machines, right? yes, How can you compare emotions with machines? yes, that's what we thought, but to some extent we are doing it। Like like when you ask ChatGPT like you should please I am sad or I am happy or I am like write a thing in this mode in this tone or that tone, so it's able to understand emotions and able to draft। Yeah, I agree that ChatGPT gives you an approx answer. yes, Never gives you an appropriate answer. true, Not only ChatGPT, any AI in this entire world working right now, Hmm. which is the form of the super AI which you said right now, that is works right under approximation, not under Yes. right. right।
So that's what we are in the narrow AI right now. That's what I said on the back of the slides. We are in the narrow. We are yet to reach the general. So that's what we are trying to improve. But still, the way we are improving, the way machines are understanding our emotions, I think we will soon reach those stages where, yeah, they can interact with us emotionally. I think maybe like I can develop someday. We will see that in the future. Well, good question. So yeah, coming here, everyday AI around us. So Google Assistants, YouTube's, when you play YouTube, like when your video gets finished, you will be getting suggestions up next. Or when you play music, so based on the tone, based on the type of the music you play, you get similar music not suggestions on the next. So these are all the AI predictions working behind there. Even spam filters. I think yeah, all of you will be using emails, Gmail. So in Gmail, on the left hand side down, you will see a specific folder called spam. So these are like random emails, promotional emails that are sent by various companies. So AI is able to detect it, and rather than disturbing you, it is putting it in different folder. So yeah, these are the AI, everyday AI that's working around us. And the most emerging area of AI in today's era is the generative AI. So what's generative AI? Generative AI is the AI that can generate text, that can generate images, that can even generate software code. To be honest, like I am a developer, I use ChatGPT a lot to develop software. Yeah, it helps me a lot. It really gives very nice code. Then AI across. Yeah, go ahead, Sinandan. Okay, maybe by mistake. Hello, Yeah. Shashwat. Yeah, I'm sorry to interrupt you, but I'm having You can another interrupt me doubt. anytime. Yeah, sure. Tell. Yeah. So the thing is, the AIs can always predict something, to show an appropriate answer to the people, but it is also killing the human brain, creativity, and everything, right? People are Yes. going with to give me these answers, give me that. They're not utilizing their own brain. They're not coming up with creativity. They're only going to Chat GPT for solutions. That is not right. That's not right. That's not right. On whose part it's not right? So don't you think AI is always killing somebody's emotion and somebody's expertise about something? Yes, it does. But when we say this, we have to think on whose part it's not right. Is a ChatGPT coming and saying you that use me, don't use your brain? Not right. We are choosing to choose But ChatGPT. if you go to an exam, if you are given with chits, won't you use it to fetch good marks? If the cheat It's is your available. own solution that you won't fetch good marks. If you if you are using ChatGPT to fetch good marks, it is always right to fetch good marks and to show to your parents, right or no? Yes, it's right, but indirectly you're But hampering it is yourself, right? also hampering your own existence. Hmm. You're providing a machine. You're providing a machine an entire information about something that comes up with a cost or something like that. It's with a cost. You provide something to machine that you're providing an information to the machine that I want this, I want that, I want Yeah. this, I want that, but you're not using your own brain. That is, isn't it wrong? It's wrong, but who is committing that mistake? It's humans, right? We are committing. It's on Then us. who is promoting that own mistake? Humans, right? That's on us, right? We can like I have an option. Okay, Shashwat, Now okay, carry on. now I have an option to make this PPT, or like even I can use AI to present this to all of you, but I didn't choose. Why? Because I want to develop my skills, I want to develop my knowledge, I want to interact personally with you. Even this PPT is made by me personally. It took really a lot of time. So I could have used ChatGPT, but I didn't. That's a personal choice. So yeah, that choice lies in See, the part of I human. would like to interrupt here Sure. with your permission, Shashwat. See, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ବିକଜ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ कि चैट जीपीटी को एज अ पर्सनल असिस्टेंट यूज करंतु जदि आपनको कॉन्फिडेंस आसुनी जे मु जोटा लिखिछि सेटा ठीक अछि कि नाही देन यूज चैट जीपीटी बट जेमती से कहले श्रीनंदन आमे जो कामटा करूचे सेथिरे एक्सपर्टीज हमर बेसी अछि एंड आमे जदि ता परे ग्रोथ हमारा दरकार देन वी विल हैव टू वर्क ऑन इट एंड वी विल हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स मु कंटेंट लिखे
I can easily use ChatGPT, Yes. but ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଯୋଉ ଇମୋସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ସେଇଠୁ ଆସେନି। ଆମେ ଯେମିତି ୱେରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଷ୍ଟୋରିଟା, Hmm. ChatGPT ସେଟା ବୁଝିପାରିବନି ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇମେଜ ଖରାପ ହବ। Yes. କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡସ୍ ଅଛି ChatGPT ରେ I have seen it uses it multiple times and ସେ ଲେଖା ଦେଖିଲେ I can say that ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା AI ChatGPT ରୁ generated. ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି exactly। so ଯଦି ଏକ୍ସେଲ କରିବାର ଅଛି ନିଜ ଫିଲ୍ଡରେ then obviously ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ତାକୁ ପୁରା ଯଦି ଆମେ କପି କରିବା ଦେନ୍ ଆମେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ଲିଜ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖୁଛେ ଲାଇକ୍ ମତେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କି ଡୋନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଲେଖିକି ଦଉଛନ୍ତି, ମେଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ୟୁଜ କରିବେ କରେକ୍ଟ ମାଇ ଇଂଲିଶ, Hmm. that will help you out। ନିଜେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ and ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମତେ ଏଇଟା ଠିକ କରିଦିଅ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାକୁ କୁହନ୍ତୁନି ମତେ ଲେଖିକି ଦେଇଦିଅ। ତ ଆମେ କେମିତି କରେକ୍ଟ ୱେରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଇଟ୍ ଇଜ ଅପନ୍ ଅସ୍। ଯେମିତି ଶାଶ୍ୱତ କହିଲେ he could have made the slide with AI, इवेन but आजिकल आम पाखे एमती भी सॉफ्टवेयर अच्छी मुझे आपन सामने प्रेजेंट कर राइट मु आसवा भी दरकार नहीं सी आसब सी पूरा मुझे जहाँ तक कही सी कहीकि जीव आप सामने इवेन मो इंटरफेरेन्स दरकार नहीं सी पूरा कहीकि जीव बट ମୁଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରୁଛି Sure. ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍। ସେସନ ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଶାଶ୍ୱତ ସାର୍ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟାକୁ। Okay. ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯାହାର ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ ठीक ରଖିବା। अच्छे ठीक अच्छे Please continue with your slides. So Shashwat sir, Sure. over to you. Okay, now we will discuss AI across industries. So how industries are now using AI? So they are using AI that will act like smart assistants in each and every field that they are in. So starting from software, IT, healthcare, fintech, education, AI acts like a smart assistant as of now. So let's zoom into these sectors. So the most important impact where the AI is putting now, where we are trying to develop, is the healthcare now, because in India scenarios are different. Out of India there are many places that lack doctors, that lack medical facilities. So AI is really growing rapidly in terms of medical technology now. How? So early cancer scans, fast drug discovery. AI कौन करे, ଆପଣ ସପୋଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରେଟା ବାହାରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟର ହିଁ ସେଟାକୁ ରିଡ୍ କରିପାରିବେ, ସେଟାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସେମିତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟର ପୁରା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିବେ। ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ୟୁ ଡେଭଲପ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ AI, ଆପଣ ଗୋଟେ AI ଡେଭଲପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ୱାର୍ଲଡର କେଉଁ ବି ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ୟୁଜ୍ରେ ବି ହେଉଛି ଟୁ ରିଡ୍ ଏକ୍ସରେସ୍, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ ଏକ୍ସରେସ୍ ୱିଥ୍ ଡକ୍ଟର ଲେଭେଲ୍ ଆକ୍ୟୁରେସି। yes, and without any failure they are doing it now. आमर स्ट्राइकर बहुत सारा एमती मेसिन्स अच्छी जो मैंने यूज कर एंड द रेस्ट इज लाइक आगुरी जिते मेडिसिन्स बनाऊला बहुत रिसर्च दरकार, बहुत ट्रायल एरर हुए, बहुत ट्रायल करने को पड़े मेडिसिन बनवाक, जोटा कि AI द्वारा बहुत इजिली हो जाऊँगी। कहीं एबे सब डिजिटल लैब्स रे सब लोक मैंने ट्रायल कर रिएक्शंस कौन हम तार आउटपुट देखिपार विदाउट वेस्टिंग टाइम, मल्टीपल रिएक्शंस गोटे थरे कर। सो देयर AI इज हेल्पिंग इन हेल्थ केयर। So the next is agriculture. In India, agriculture holds a very large domain. Some examples like drone crop checks, pest alerts. So drone कहीं दरकार हमको, बिना ड्रोन रे भी आपन करि परिबे, बट आपन को CCTVs लगेबा पड़ो सब आड़े, कहीं AI को तो आमे आमर सिना आखि अच्छी आम एनालाइज करवा। हाउ कैन AI डू इट? इट कैन डू इट विथ इमेजेस, ताको इमेजेस दरकार, ताको फोटो दरकार जिनसर, ता द्वारा ही से देखि परिबो। तो AI कौन कर पारिबो, आपनकर जदि बहुत बड़ क्रॉप अछि, फार्मर जदि बहुत बड़ क्रॉप रे ऑपरेट करूची, तो क्रॉप रो को जगह ऑलरेडी पेस्ट इन्फेक्शन हो गलानी, को जगह पानी दरकार, को जगह पेस्टिसाइड दरकार। आजिकल सॉइल भितर बहुत सारा सेंसर्स लगुच जो मैंने न्यूट्रिएंट लेवल सब जिन को एनालाइज करके डाटा पठे दूसरी। तो सीटी कौन कर फार्मर सांगे सांगे ताको अलर्ट मिल जाव, सी जापर कि अच्छा ए जगह मत सप्लाय कर पानी, ए एरिया रे पेस्ट स्प्रे करार अच्छी,
तो ताको गोटे प्रोएक्टिव या फिर जदि सेटा ताको जଣା पड़ नथांदा धीरे धीरे से स्प्रेड ही पूरा क्रॉप्स द्वारा स्प्रेड हो जीवन ताको बहुत लॉस हो. सो टॉकिंग ऑन ओवरऑल it is really helping farmers save money and also protecting the soil. Now AI in education in the sense personal study plans, instant feedback. So एबे कौन होची आगुर जेतले आम एजुकेशन विषय भाबुथिले मु तो जेतले मो चाइल्डहुड विषय कहबी तो मु ट्यूशन माने हमरो किछि बहुत कम ऑप्शन से थिला या तो ट्यूशन्स जो माँ ही बहुत जगह बहुत पिला माँ ही पढ़ाती माँ पाखरे ही पढ़ाती तो से जिनस ए कौन हो चैट जीपीटी द्वारा बहुत इजी हो जाऊँगी. सो चैट जीपीटी दे कैन चैट जीपीटी एआई. सो एआई कैन अडॉप्ट और एडजस्ट लेसन्स टू each student's pace. They can act like your private tutor that never gets tired. ताको तुम जिते क्वेश्चन पचार से केबे टायर्ड हेबनी एंड तुमको खुशी खुशी आंसर दब से. सो दे कैन आउ तुमको जदि सपोज तुमको एग्जाम पे प्रिपेयर करिवार अछि आस्क इट विल गिव यू शेड्यूल कि तुम एटा पढ़ एति टाइम रे पढ़ जेमती तुमको टीचर गाइड करती ऑलमोस्ट सेमती लेवल तक पहुँच गलानी. एबे बहुत बड़ बड़ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स जो मैंने ऑनलाइन रे अछंती आकाश है रेजोनेंस है से ऑलरेडी एआई यूज कर चैटबॉट्स यूज कर दिन राति 24/7 तुम को भी टाइम तुमको डाउट आस पचार क्वेश्चन एंड इट विल आंसर. फाइनेंस गाइडेंस. सो इटा बहुत रिस्की बिकॉज मनी इज इनवॉल्व एंड वेयर मनी इज इनवॉल्व देयर लाइक बहुत सारा सेंटिमेंट्स इनवॉल्व रहता है. So in finance, like fraud alerts, risk scoring, credit card companies run AI models that spot suspicious purchases in milliseconds and freeze the transaction thereon. आजिकली बैंक कौन कर AI डिप्लॉय कर टू मॉनिटर ट्रांजैक्शंस. भावतु इंडिया पॉपुलेशन केते बेसी एंड जनकर तो आजिकल 2-3टा अकाउंट था बैंक रे तो केते सारा अकाउंट्स अच्छी एंड से हिसाब से केते ट्रांजैक्शंस आजिकल तो यूपीआई भी चलती आपड़ भी यूपीआई डेली यूज करते तो से हिसाब से केते ट्रांजैक्शंस होची डेली. तो मनकर आप गोटे टीम भी बने दिंतु बैंक रे 100 जनकर या फिर 1000 जनकर दे कैन नॉट मॉनिटर ऑल द ट्रांजैक्शंस विच एआई इज डूइंग इट नाउ इन रियल टाइम. तो जदि किसी फ्रॉड होगा चाहूँगी या फिर जदि किसी फ्रॉड या फिर सस्पिशियस लगुच तो से ट्रांजैक्शन को सेठ ही स्टॉप कर दूसरी या फिर जदि भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होची से ट्रांजैक्शन रिवर्ट बैक हो जाउची आउथरे. आउ गोटे बहुत बड़ एग्जांपल एबे रिसेंटली जो माने एयरटेल यूजर्स थे एयरटेल सिम जो माने यूज करते तो से आजिकली मनकर स्पैम या फिर अनवांटेड कॉल्स आसुची तो सी एयरटेल वार्निंग दे दूची एयरटेल वार्निंग स्पैम कलर. तो इट इज ऑल्सो यूजिंग दे आर ऑल्सो यूजिंग एआई टू डू दैट. So why this session? Why are we doing this session? Why is Mahashakti giving you this session? So that you can perform better in your workplace, right? What are the goals? Efficiency and automation. आपण डेली लाइफ रे जो काम करछंती ताको एफिशिएंटली करि परिबे एंड बहुत जिंस जोटा कि हम मैनुअली करि परछंती ताको ऑटोमेट करि परिबे. फास्टर डाटा ड्रिवन डिसीजंस आगुर जोटा बहुत टाइम होतला मे बी बहुत जल्दी हो. ईमेल लिखा आपन को सपोज आप किसी गोटे प्रपोजल अच्छे आपन पाखे आप ईमेल रे ताको पठेबे आपन मैनेजर या फिर आपन लीड को पाखु केते फास्ट तो आपन भाबिबे कि कौन कौन लिखी आप लिखला पर भी डाउट थी कि यार ठीक लिखी कि ना आपको टे देखदेवी पचार देवी या फिर जी तार जार इंग्लीश भल थो पचार देवी से फिल हो कि लाइक पचारि अरे चलो पठेदेवी. तो देयर चैट जीपीटी कैन हेल्प यू. इट्स योर पर्सनल असिस्टेंट सिटिंग जस्ट बिसाइड यू इन योर फोन. तो ताको दियो से एकदम से मे बी हार्डली 5-6 सेकेंड्स से लिखी दिए ईमेल. तो that's how fast it is. So recapping the benefits: efficiency, better decisions, accessibility. Efficiency माने आपण आगुर जदि काम करि पारथले ताको आउरी एफिशिएंट वेरी करि पारिबे ताकि आपण जो टाइम बंचौछन ताको आउ किसी काम रे इन्वेस्ट करि पारत. बेटर डिसीजंस जेहेतु एआई जो डाटा उपर ट्रेन होची तो आप जब किसी रिलायबल डाटा या फिर किसी गोटे रिलायबल डिसीजन नेबार अच्छी यू कैन आस्क एआई कि यार ए जिनस मत डाटा दियो तो से डाटा को रेफर करके आप डिसीजन नहीं पारे कि या आई एम गोइंग टू डू दिस. एंड एसेसिबिलिटी एआई इज रियली वेरी मच एसेसिबल नाउ डेज. एसेसिबिलिटी कहवा माने आप मोबाइल यूज करेंगे लैपटॉप यूज करेंगे इवेन आजिकली टाइप करा भी दरकार ना वॉइस लाइक जस्ट
भय ता संग कथा है कि आपण यूज करबे से टाइप एक्सेसिबिलिटी. So AI boosts the efficiency, automates repetitive tasks, supports better decisions and open services like instant language translation. Short रे कहबाक गले speed, cost saving, better decisions and greater accessibility. That's your profit. Now I will come to the challenges. Yeah, like sir asked about, like Raghunandan sir, he told about the challenges. He was discussing that time about the challenges, right? To be honest, no technology in this world is risk free. Every technology comes with a challenge, with its risks. Yeah. So the first and foremost challenge why people fear AI is you will lose your jobs to AI. But not always lose. If everyone will be losing jobs to AI, maybe like government shouldn't like government may not have allowed AI here in India because India is a democratic country, right? Government is concerned after the people, but it's not like that. So what are the challenges? Obviously job loss will be there, but who will lose jobs? The persons who are not aware of AI, the persons who are not using AI, the persons who are not upgrading themselves with AI, right? So the things that can be done by AI, companies will no more hire you, right? So companies will hire you for other things. Do that, learn that. Privacy. So privacy is another challenge in AI because AI learns through data. AI data ru learn करे. जदि हम ताको भूल डाटा देबा तो से भूल जिनस हमको देबा. That's where the privacy comes in and bias. तो recently गोटे मॉडल आसथिला AI रो ग्रो डीप सीक कहेगी चाइना ताको लॉन्च करथिला. तो डीप सीक रे जाई कि जदि आपण पचारिबे जे हमर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अछि आसाम अरुणाचल प्रदेश ए सब जिनस. तो आसाम अरुणाचल प्रदेश कौ नेशन को बिलोंग करे जदि आपण पचारिबे तो से चाइना देखौथिला. बट रियली दे बिलोंग टू इंडिया. बट से कहीं देखौथिला बिकॉज चाइना ताको से हिसाब रे ट्रेन करछ. तो ये सब चैलेंजेस एक्चुअली अबे करेंटली अच्छी एआई को. तो व्हाट कैन वी डू? वी कैन अपग्रेड आवरसेल्व्स. शिखिबा नुआ जिनस निजको अपग्रेड करबा एंड जॉब होल्डिंग. लाइक जदि आपन को लागुच कि आपन को जॉब एआई कर दोछि तो आपन एमती किछि देखंतु, एमती किछि अपग्रेड करंतु जोटा कि आपन को जॉब रे आपन करथिबे एंड एआई ताकू लाइक यू आर एट बेटर एट इट. जोथे कि आपन बेटर थिबे देर एआई की यूज करा जाउथिबो बट पूरा एआई की यूज करा जीवनी. एज एआई एज एन असिस्टेंट यूज करा जाथबो. जेमति कि सुशीता मैडम कहले लाइक से कंटेंट लिखंती, राइट? So companies आजिकली ChatGPT can write content, AI can write content, but companies फिर भी कहीं प्रेफर करना बिकॉज से ना किसी भी लिखे. इट्स गुड टू रेफर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट, बट सी पूरा AI से पूरा से काम कर पारे नहीं. दैट्स वेयर द जॉब होल्डिंग पार्ट कम. एंड डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. सो व्हेन यू आर यूजिंग AI, आपन जो AI यूज करती प्लीज आपन को एडवाइस करबी गोटे ट्रस्टेड AI यूज करंतु जेमति कि ChatGPT, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, आमर गूगल जेमिनाई, ट्रस्टेड यूज करंतु. कहीं ना बहुत सारा AI आपन को डाटा एक्सेस करती तो आपनकर पर्सनल इनफॉरमेशन, आपन को पासवर्ड्स, आपन ए सब जिनस तो AI को देबारु अवॉइड करेंगे. So responsible AI, this is the point that I was waiting to discuss. We should use AI responsibly. So there 80 गोटे चॉइस आस जाए. दैट्स ए ह्यूमन चॉइस. लाइक जदि मो पाखे ऑप्शन अच्छी एग्जाम रे चीट करके लिखा तो मे बी इफ आई एम चूजिंग दैट ऑप्शन से मोर बुद्धि किसी इंप्रूव होनी या फिर मुझे किसी शिखुनी बस मैं एग्जाम पास हो जाऊँगी. एग्जाम पास होजी तापर आगे जाके कॉलेज प्लेसमेंट हेनी. इंटरव्यू तो बुद्धि ना मोर. फिर ना मु ChatGPT यूज करी. ChatGPT यूज करी कि मते पढ़ा को हेल्प करे. मुझे शिखा चाहूँगी, मुझे शिखी, एग्जाम देवी, कंपनी को जी. दैट्स ए ह्यूमन चॉइस. That's on us. That's the part of responsible AI that we will. So, and another part is that government and companies are drafting rules. किछि rules जो मैंने government follow करचंती. So, to make AI more reliable,
किसी स्टैंडर्ड सेट कराऊँगी किसी रेगुलेशंस कराऊँगी कि लाइक वी नीड टू यूज करेक्ट डाटा टू ट्रेन एआई एंड ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस रहा दरकार डाटा. I got a message. Yes, Grok is available. Yes, Akash, Grok is available, but as it is not that approved, so it is not available publicly. You can use it like ଆପଣ Grok use କରିପାରିବେ but trusted sites ରୁ available ରହିବନି. ସେ ସେଇଆ ହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, is it reliable? Okay, sorry, I misread. Reliable. Okay, I misread. Sorry. Grok, I will not suggest. As an AI engineer, I will not suggest. Because ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କେଉଁ ଡାଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ତାର ସୋର୍ସ କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କମ୍ପାନୀର ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ, ସେ କମ୍ପାନୀର ଗୋଲ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିଛି କି ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ. ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ସୋ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ସଜେଷ୍ଟ ଇଟ୍. ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର କୋପାଇଲଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୁଗଲର ଜେମିନି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ. ଏ ତିନିଟା ଫେମସ୍ ମଡ଼େଲ୍ସ, ଏ ତିନିଟା very And trusted what models. about Meta AI? Yes, Meta AI also is trusted. Good point. So now we will talk about the road ahead, where AI is heading. So AI is heading towards human collaborations. So what we can expect in the future is every tool that we are using now is coming up with an AI integration. So yeah, doctors are going to work with AI co-pilots, farmers are going to work with smart drones, teachers are going to work with tailored learning platforms. So there, our main role will be to guide AI in a direction that serves everyone, right? तो AI को डरिबा बदल रे AI को निजर साथी बने की चलिबा, that's what the future is. And बहुत नुआ रोल्स भी जनरेट होची, AI इंजीनियर, AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर, AI ऑडिटर. इवन मु जो एबे जॉब करूची AI इंजीनियर आगु नथिला, एबे अछि जस्ट बिकॉज ऑफ AI. सो गेटिंग स्टार्टेड, आमे AI को हमको डे टू डे लाइफ रे केमती यूज करि परिबा. फास्ट होची ईमेल ड्राफ्ट्स करि परिबा, आमे गूगल जेमिनी यूज करि परिबा फॉर डे टू डे टास्क. विंडोज कोपाइलट भी गोटे बहुत ट्रस्टेड, ताको भी आमे यूज करि परिबा. एक्सेल बहुत जण कंपनीज रे एक्सेल रे काम करंती, मु देखिछि नोटिस करछि. तो आजिकल एक्सेल रे गोटे नुआ फीचर आसलानी, एनालाइज डाटा टॉप राइट रे आसथिबो. तो इफ आपनको से एक्सेल गोटे क्वाड्रो मिलिछि एंड आपनको जणा नै सेटरे कोन डाटा अछि, यू कैन यूज दिस फीचर. It will analyze the data and it will give you the results. The most important part is keep experimenting with things and like see how it works. तो जदि आपण अबे कंफर्टेबल अछंती या फिर आपण गोटे भल स्पेस रे अछंती, देन यू कैन गो हेड विथ दिस एक्टिविटी. सो चैट जीपीटी आपण इंस्टॉल करि परिबे. चैट जीपीटी प्ले स्टोर रे अवेलेबल अछि, मोबाइल पई प्ले स्टोर रे अवेलेबल अछि, ऐप स्टोर रे अवेलेबल अछि. जो माने लैपटॉप रे अछंती चिल करंतु, पानी पियंतु, चा पियंतु, जहाँ भी. आई विल गेट बैक टू यू. फिर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर रे आपण जाके सर्च करेंगे चैट जीपीटी. दिस इज द ऑफिशियल लोगो. एमती बहुत सारा ऐप्स आपको मिल, बट ओपन एआई द्वारा जहाँ पब्लिश होता ताकू इंस्टॉल करेंगे या फिर ए स्क्रीनशॉट आप रेफर करेंगे इंस्टॉलेशन पे. फिर आसला जो मैंने लैपटॉप अच्छा. सो लेफ्ट स्क्रीन रे आप देखिपारे जो आप किसी भी ब्राउजर खोलिक chatgpt.com को जीवे तो आप एमती स्क्रीन पाइबे. सो व्हेन यू टाइप chatgpt.com in any browser and visit it, you will get a screen like this. So it prompts you, ask me anything, see how confident it is, you can ask me anything. And right side होची मोबाइल एप्लिकेशन, जो आप एप्लिकेशन यूज करेंगे से आपको एमती स्क्रीन मिल. ओके, थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा आपन को बेनिफिट पाई, आपन को रोल पाई थोड़ा सा डीप रे जीवी मु यूजिंग चैट जीपीटी फॉर डे टू डे ऑफिस. कौन पे यूज कर पारे? ईमेल राइटिंग एंड मैनेजमेंट, प्रपोजल राइटिंग, ग्रांट राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस. ओके, ईमेल राइटिंग एटा बहुत कॉमन चीज, मु भी डेली यूज करे. ईमेल्स लिखा पड़े बहुत जन को, एटा अपडेट अच्छी, एटा अपडेट अच्छी. यूज चैट जीपीटी, जोड़ा मेल तुम 10 मिनट लगुला 1 मिनट रे हो. What is email writing? So quickly compose professional emails for fundraising, outreach or any other purpose you want. Summarization, generally bulletin points, summaries of long emails, documents and attachments. आपन को किए जो मेल पठेला बहुत लंबा मेल लिखिक पढ़ा तो इच्छा हेनी, या फिर मेल रे किसी अटैचमेंट अच्छी पीडीएफ लंबा डॉक्यूमेंट जदि पढ़ा इच्छा होनी या फिर बहुत टाइम लगुच पढ़ा, चैट जीपीटी रे पकांतु, समराइज करंतु,
कौन अच्छी डॉक्यूमेंट रे कौन करबा चाहूँ सी इट विल डू इट फॉर यू ट्रांसलेशन आप ईमेल मल्टीपल लैंग्वेज लिखिपारे भले इंग्लीश सब आड़े प्रेफर बट स्टिल यू कैन राइट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस तो मुझे आपको गोटे एग्जांपल देवी सो ये गोटे मु यूज केस नहीं एग्जांपल यूज केस आउटरीच टू ए कॉर्पोरेट डोनर जिते मु गोटे कॉर्पोरेट डोनर को रीच करने चाहूँ तो हियर I will be writing the prompt, write a professional and empathetic email to a CSR head at a company requesting support for our education program for underprivileged children in rural Odisha. Highlight our impact and request for a meeting. एटा गोटे बहुत जनरल प्रॉम्प्ट जोटा कि मु लिखी कहीं ना मु किसी कंपनी ना नेबा चाहू नथली लेट मी शो यू ओके सो मु से सेम जिनस चैट जीपीटी रे पकेली तले यू कैन सी आई विल प्रेस एंटर नाउ विथ इन सेकेंड्स इट विल स्टार्ट राइटिंग ओके तो सी आपन लिखिदेला 5 सेकेंड लिखिदेला बट एटा आपन कॉपी पेस्ट करके पठेदेवे ना द नेक्स्ट डे विल गेट अ रेजिग्नेशन लेटर डोंट डू दैट सो कौन करेंगे आपको देखिए पढ़े रेफर करेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे कॉपी पेस्ट जदि करुँच भी तो ताकू एडिट करूँ डायरेक्ट कहीं चैट जीपीटी बहुत टाइम रे गला भूल जिनस भी दिए तो देखूँ एमती लिखाई ए जगह ना चेंज करूँ ए जगह बहुत जिन चेंज करने को पड़ो आपको चेंज करके पठातु दैट्स अ गुड प्रैक्टिस दैट्स हाउ वी यूज AI फेल देन कमिंग अगेन बैक फिर आसला आमर प्रपोजल राइटिंग एंड ग्रांट राइटिंग तो बहुत जन मैनेजर्स में भी साइट लीडर्स से प्रपोजल लिखा पड़े किसी नुआ प्रोजेक्ट किसी ग्रांट्स पाइबापी प्रपोजल लिखा पड़े तो देयर यू कैन रिक्वेस्ट चैट जीपीटी कि मत ए प्रपोजल्स यहाँ लिख एटा रिक्वायरमेंट अच्छी यू कैन राइट ए प्रपोजल फॉर दैट एंड द नेक्स्ट थिंग इज कंटेंट सजेशन फिल इन सेक्शंस लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इम्पैक्ट एनालिसिस सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा सो जिते आपन किसी प्रपोजल या फिर किसी भी रिपोर्ट फिल कर बहुत जगह थाए राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इम्पैक्ट प्रोजेक्टर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन प्रोजेक्टर इम्पैक्ट एनालिसिस कौन बस आस्क लाइक ए ऊपर प्रोजेक्ट डायरेक्ट पचार दियो डायरेक्ट तुम जाकि चैट जीपीटी को पचार दो व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो लाइक सी आंसर दे पारिबनी ताको बुझाओ कि मोर ए प्रोजेक्ट अच्छी एंड व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर दिस तो सी आपन भल प्रॉब्लम स्टेटमेंट दब सेम इम्पैक्ट एनालिसिस या फिर सस्टेनेबिलिटी प्रूफ रीडिंग आप ऑलरेडी गोटे जिन लिखि सारी से ग्रामाटिकल ठीक अच्छी कि ना या फिर थोड़ा सा आउ कौन चेंज हो पार सेटा भी आप चैट जीपीटी पकातु जो लिखिं सेम पकातु इज इट राइट इज इट ग्रामाटिकली राइट हाउ कैन इट बी इम्प्रूव इट विल डू दैट फॉर यू आउ गोटे एग्जांपल मुझे देखी ड्राफ्ट ए ग्रांट प्रपोजल फॉर ए प्रोजेक्ट दैट प्रोवाइड्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन एजुकेशन एंड सैनिटरी किट्स टू एडोलसेंट इन रूरल ओडिशा इंक्लूड ऑब्जेक्टिव बेनिफिशियरीज एंड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ओके लेट्स सी चैट जीपीटी कौन बोलছে सेम जिनस मु पेस्ट कली मुझे प्रॉम्प्ट आई विल गिव द प्रॉम्प्ट आपन प्रोजेक्ट टाइटल मिलगला एग्जीक्यूटिव समरी मिलगला लाइक कौन आप एग्जीक्यूटिव समरी रखिपारे ऑब्जेक्टिव्स भी देदेला आपन को लाइन रे एजुकेटेड एम्पावर एक्सेस टू सेफ सैनिटेशन कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन मॉनिटर एंड इवैल्यूएट टार्गेट बेनिफिट्स इवेन ताकू आमर गाँ जाकर भी ना जना अच्छे डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ कंधमाल कोरापुट को डिस्ट्रिक्ट रे गर्ल्स माने बहुत ये सब जिन प्रॉब्लम्स फेस करते भी जना अच्छे देखो सी लिखी रायगढ़ कंधमाल कोरापुट मयूरभंज मालकानगिरी लाइक डाटा बहुत ही अच्छी पाखे यू कैन रिलाई ऑन इट तो यहाँ आपन को सी गोटे टाइम लाइन भी देदेला कि आपन कौटू स्टार्ट करेंगे मंथ 1 to 2 कौन करेंगे 2 to 6 कौन करेंगे 3 to 6 यू कैन रेफर दिस मुझे कहूनी कि यहाँ ही करूँ आप यू कैन रेफर दिस सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि चलो एमती गोटे प्रोजेक्ट को आम कैरी ऑन कर फिर आउटकम्स कौन आसो तो केते खर्च हम बजेट सेटा भी आपन से दे दूँ दैट इन इंडियन रुपीज सो दिस इज हाउ AI इज स्मार्ट
exactly, but पुणी कहबू Hmm. copy paste करिवेनी बिल्कुल रेफर करेंगे. because yes because आपण जो डेटा से जो डेटा दउची मे बी आमे जो काम करूचे सेतरे एई जगह रे जहाँ भी खर्चा वर्चा होची आम बजेट टा इट विल बी डिफरेंट और से जो मंथ्स दउची एई एतिकी मंथ रे एई काम हबो बट आमे देखिबार अछि आमे एग्जैक्टली केते दिन नउचे सेई टाइप रा काम करिवा पई तो सेई हिसाब रे यू विल हैव टू एडिट इट Yes. पूरा सीधा केबे भी कॉपी पेस्ट करिवेनी बिल्कुल. फिर आम डॉक्यूमेंटेशन पर्पस पे भी बहुत जन यूज करते चैट जीपीटी मीटिंग नोट्स रिपोर्ट जनरेशन पॉलिसी अगर किसी लाइक जो मैंने फाइनेंस सेक्टर अच्छा पॉलिसी ड्राफ्ट कर बहुत सारा एसओपीस वगैरह बनवार था तो यू कैन यूज इट फॉर दैट. इट गुड एग्जांपल केस लाइक आई विल नाउ लाइक फॉर क्रिएटिंग ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. So create a standard operating procedure for onboarding new volunteers in an NGO that works on healthcare outreach. So I will put that. सेम जिनस मुझे पुट कली सेम ये जहाँ लिखाई सेम से पुट कली आपन सामने. जदि आप लाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में भी समस्त रोल न था जस्ट फॉर एन एग्जांपल. सो या इट विल गिव यू ऑल द डिटेल्स इन स्ट्रक्चर्ड वे बहुत स्ट्रक्चर मेनर से आपको दब. फिर आगू जाकि आसब फॉर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन जमती मुझे कहली लाइक ए प्रेजेंटेशन बने पारि मुझे कही पारि कि बने दे से बने भी दब बट दैट्स लास्ट इट्स आवर चॉइस. लाइक मु रेफर करने को प्रेफर कली कि लाइक आई चूज टू रेफर एआई बट नॉट मेक इट टोटली बाय एआई. सो प्रेजेंटेशन बने पारे आप इनफोग्राफिक आइडियाज इनफैक्ट आग स्लाइड जितकी भी फोटोज सब देखिले आप निजे बनई विथ द हेल्प ऑफ एआई. सेटा को आपको कोठी भी ऑनलाइन कोठी भी मिलबनी सेटा मु निजे बनई. यू कैन सर्च फॉर इट. तो वीडियो स्क्रिप्टिंग बहुत जन वीडियोस वगैरह बनाती बहुत जन ब्लॉग्स करती तो फॉर दैट थिंग आप गोटे स्क्रिप्ट दे पार सी कि ए टाइप तुम बन पार ए टाइप कर. सो इट्स ऑल्सो ए प्रॉम्प्ट द सेम थिंग हियर ऑल्सो एग्जांपल प्रॉम्प्ट गोटे अच्छी रिसर्च एनालिसिस. सो यहाँ गोटे बहुत डिफरेंट टॉपिक जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा से करेंगे कहीं ऑफिस डे टू डे लाइफ रे बहुत जन ए इनवल्व नहांती. तो टॉपिक एक्सप्लोरेशन जो टॉपिक लाइक एग्रीमेंट पॉलिसीज जगह आपको बुझा था यू कैन पुट दोज एग्रीमेंट्स इन चैट जीपीटी से आपको बुझेदेव कि पॉलिसी कौन एग्रीमेंट कौन. आउ डोनर प्रोफाइलिंग सपोज बिफोर रीचिंग ए डोनर इट्स ऑलवेज बेटर टू नो दैट डोनर. तो से हिसाब रे यू कैन आस्क चैट जीपीटी लाइक से डोनर रो प्रोफाइल कौन से आपको बुझेदेव. दैट डोनर विल बी इम्प्रेस्ड लाइक दैट पर्सन नोस मी बिफोर रीचिंग मी. दैट्स ए ग्रीन सिग्नल. सो ये भी गोटे प्रॉम्प्ट अच्छी explain in simple terms what the National Education Policy 2020 means for NGOs working in education. So just an example prompt. So now using chat GPT for personal life खाली कंपनी पाई आमे तो काम करनु पर्सनल लाइफ भी आमे बंचुचु तो या chat GPT will help us for that also personal life in terms of daily productivity learning and self education family and community support every sport. So here डेली एक्टिविटी टू डू लिस्ट मार्केटिंग आप जाऊँगी ए खाद्य कौन कौन दरकार पड़ पाए जदि मन पड़नी तो जस्ट रेफर ऑब्वियसली से तो आम बहुत भल भाव मन पड़े बट यू कैन रेफर ऑलवेज. या फिर रूटीन सेट करार अच्छी कि मोर काली ए काम अच्छी तो को काम को केते टाइम देवी इट कैन डू इट फॉर यू. मील प्लानिंग आपन गोटे जिनस या फिर किसी गोटे रोसे करार अच्छी से आपको रेसिपी देदेव. बजेटिंग हेल्प आपन को बजेट क्रिएट करार अच्छी आपन को ए मंथ रे एतिकी बजेट ए जगह रे यूज करार तो से सब बजेटिंग प्लान दे देबो से आपन को. लर्निंग एंड सेल्फ एजुकेशन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आई वुड लाइक टू फोकस बिकॉज एज ऑफ नाउ learning and improving is very very important because tech is very fast. If you are not learning if you are not improving maybe you will fall very very back behind. So use करंतु AI को निजे सीखिबा पई explain anything explore any topic that you like. आपन किसी भी टॉपिक किसी भी कोर्स आपन करबा चाहछंती ask AI explain me this it will do that for you. लैंग्वेज लर्निंग आपन किसी लैंग्वेज सीखिबा चाहछंती AI टू सीखि परिबे हिंदी इंग्लिश किसी मराठी कन्नड़ा ओडिया येस इट विल डू दैट फॉर यू. जनरल क्वेश्चंस एनीमिया कौन
how can I apply for Aadhaar card, how can I apply for ration card, it will give that. Family and community support, एमती जो मैंने मेरिड दोज वेब किड्स राति शोला बेलू बहुत टेंशन दिखती स्टोरीज मत स्टोरीज शुणे दियो शुणे दियो 5 सेकंड 6 सेकंड आप चैट जीपीटी को पचारतु कि जनरेट ए बेड टाइम स्टोरी इट विल गिव यू से स्टोरी शुणे आराम से शोजे पिला ग्रेट हेल्प राइट. सो सेटा ही ना आपको पिला डेवलपमेंट भी क्विजेस फन फैक्ट्स या फिर लर्निंग रिसर्च भी आप यूज करेंगे निजर पिलांपाई. डिजिटल लिटरेसी लाइक जो मैंने एबे डिजिटली माइग्रेट होती जो मैंने डिजिटल आगुरी से अवेयर नथिले एबे माइग्रेट होती दे कैन आस्क हाउ टू यूज दिस ऐप, हाउ टू यूज फोन और हाउ टू यूज दिस थिंग्स. AI will explain you. Emotional support, so this is the latest thing that is come. सो आपण जदि भल फिल करना आपण बहुत लो फिल कर या फिर मेंटली अनस्टेबल अच्छा या फिर एकला अच्छा कई कथा ना फोन उठुना के यू कैन टॉक विथ AI. सी आपण को कथा शुणव एंड से हिसाब से रेस्पॉन्ड भी कर. दिस इज द लेटेस्ट थिंग दैट इज कम. यू कैन ट्राई दैट. चैट जीपीटी हैज दिस फीचर. यस यू कैन ट्राई. या फिर आपण को लव वन्स भल फिल करना आपण किसी गोटे लिखिकी पठेबा चाहते यू कैन डू दैट. These are some of the thing from here. I will try this short story once. Just to show you like AI can answer in Odia too. Okay, so ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି write a short bedtime story in Odia about a squirrel who learns the value of sharing. एठी मु ऐड करछि ऐड मोरल एट द एंड एटा भी ऐड करछि. ओके आई विल प्रेस एंटर. ओडिया लिखला AI से लिखिबो से ताडे आराम से आमे हमर कंटिन्यू करबा. So now we have almost come to the end of this session. So now we have some interactive activities that you can try. मु आपन करिक भी देखेबी जदि आपण करिवे तो लाइक बहुत भलो. आपण या फिर सेशन सरला पर भी आपण ट्राई करि पारंती. म ए एटा को आपन को मु चैट विंडो रे पठे देबी. एक्टिविटी होची हाउ AI कैन हेल्प अस इन प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी. सो एठी हमें जो प्रॉम्प्ट ता दिया हिची प्रॉम्प्ट माने कोन आमे जो AI को जो पचारुचे जो हमको ताको टाइप करके दोचे ताको ही प्रॉम्प्ट कहंती. दैट्स कॉल्ड प्रॉम्प्ट. सो एठी मु लिखिछि कि आई एम डैश एट डैश लाइक मो रोल ये मेंशन करी ये फिलअप करने पड़ो चेंज करने पड़ो. सो इट्स एन विथ दिस सेक्टर कंपनी सजेस्ट मी फ्यू की वेज इन विच चैट जीपीटी कैन हेल्प मी टू एनहेंस माय फंक्शनलिटी एट वर्क एंड इम्प्रूव माय एफिशिएंसी. तो ए सेम जिन आपको मुझे करके देखेबी एंड आपन भी सेम वे फॉलो करेंगे जिनटा. तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मु आपन को देखेबी. तो मुझे लिखले कि आई एम ए फील्ड एग्जीक्यूटिव ऑफ महाशक्ति फाउंडेशन. मुझे जड़े फील्ड एग्जीक्यूटिव अच्छी महाशक्ति फाउंडेशन रे. इट्स एन NGO सेक्टर. सजेस्ट सम की वेज इन विच चैट जीपीटी कैन हेल्प मी टू एनहेंस माय फंक्शनलिटी एट वर्क एंड इम्प्रूव माय एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एज वेल. तो जितेबाला भी आप चैट जीपीटी या फिर किसी भी AI मॉडल संगे कथा होचंती ऑलवेज प्रेफर ताकू पूरा कंप्लीट डिटेल्स देबे. कंप्लीट तेबे ही सी ठीक से आपको आंसर दे पार. जिते भल भाव में आपको बुझेबे सी आपको से भल भाव आंसर देव. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो यहाँ मुझे एंटर कली. सो चैट जीपीटी आपन को या फिर AI आपन को को वे से हेल्प कर पारिबो या फिर आपन AI को वे से यूज कर पारिबे एज एन फील्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. यू कैन सी सी कहि भी देला कि तुम ए जिनस यूज कर पारिबो एंड सी गोटे एग्जांपल प्रॉम्प्ट भी देलानी कि ए प्रॉम्प्ट लिखिले से जिनसटार आंसर मिलिबो. डाटा एंड सो डॉक्यूमेंटेशन, डाटा एंट्री, सर्वे, कम्युनिटी कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके सो मु एक्टिविटी रो ए जो प्रॉम्प्टा मु चैट विंडो रे दे देबी आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन. यू कैन आल्सो ट्राई इट. आपण भी देखंतु कि लाइक इट्स इंटरेस्टिंग. आपण देखंतु आपण केमती बेनिफिट ही पारिबे AI द्वारा. And the next activity is somewhat personal thing.
ଆପଣ କେମିତି ନିଜେ ପର୍ସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ସୋ ଏଇଟାର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ରହିବ ଆଇ ଆମ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ମୁଁ ଏତିକି ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ, ଆଇ ଆମ୍ କରେଣ୍ଟଲି ୱାର୍କିଂ ଏଜ୍ ଦିସ୍ ରୋଲ୍, and apart from work, how can ChatGPT help me to enhance my skills and AI awareness? Being AI aware is very important nowadays, तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ AI awareness को specifically include कली। तो let's see how ChatGPT can help us. Okay, I am Shashwat Pattanayak. I am 24 years old. I am currently working as an AI engineer. Apart from work, how can ChatGPT help me to enhance my skills and AI awareness? Done. Screen share है नहीं। Sorry. Thank you for informing. ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଲି ଏଇଟା ଆଇ ଆମ୍ ଶାଶ୍ୱତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ତ ସିଏ ଲେଖିଦେଲା ଲାଇକ୍ AI ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ଏଇଟା ରେଫର୍ କରିପାରିବେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାସ୍, ଆପଣ AI ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ରୋଲ୍ ଦେଇଛି ତ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ତ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ଦେବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ହିସାବରେ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝେଇକି କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। So yeah, that's all. Finally I will tell that AI is here to stay. We choose how to use it. ଯେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁଛୁ କି ଲାଇକ୍ ହଁ ୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି ତ ପଳେଇବ ଆଗକୁ ଯାଇକି, ନା, AI is going to stay. ଯେମିତି ଲ୍ୟାପଟପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍କଟପ୍ସ, ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆସିଲା ରହିଲା, ସେ ଇଭଲ୍ଭ ହେଲା ବଟ୍ ରହିଲା, ବେସିକାଲି ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆଜିକାଲି ଏତେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଲ୍ୟାପଟପ୍ସ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନେଇକି ବାହାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, 10-15 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲ୍ୟାପଟପ୍। ତ ଇଟ୍ସ ଇଭଲ୍ଭ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛି ବଟ୍ ଅଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେମ୍ ଅଛି। ଦ ସେମ୍ ୱେ AI is going to stay. It will evolve but it will be there. So we should decide how to use it responsibly. We should plan to collaborate with AI. We should be always curious, we should be critical, most importantly we should be safe. Thank you for your time. बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम पाए, and I am really happy to answer questions or hear your thoughts using AI. तो ଆପଣ क्वेश्चंस पचारि पारନ୍ତି या फिर ଆପଣ AI विषय କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ସେସନ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି AI ବିଷୟରେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ। Questions ଯାହାର ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ପଚାରି ପାରିବେ ଏବେ। Shashwat, was a very good, wonderful presentation because many of our Indians are not that much of aware of the AI when it comes to picture. And it is a support function for every aspect of our life. What you very, very nice your presentation. And you have you have been delivered. The AI is supporting for the finance and the healthcare system. Okay, it's a very nicely supporting people. It is an additional support software. Okay. Even in finance, but when you say negative about part is one negative error. It's my point of view. Yes, what yes, we observe. Feel free to say. Regarding finance, okay, finance talk about there are more than 80 crores of population in India that are having bank accounts. Yes. Right. Due to AI, every second, most people are facing the financial frauds only because of AI. Okay. So we are struggling to protection of this prevention and fraud activities. Very difficult. One It's thing. really difficult. The second thing, healthcare, robotic surgery has been very, very advanced level of the technology has implemented in India. In Bhubaneswar also we have seen. But that has been designed by the support of software and AI. But someone from America or Japan or Mumbai has to operate surgery from there itself, and people are getting right kind of surgery or any specialist through AI. But if any, because of machine is an error every time, right? Anything goes wrong. Because last time also we had a news from one the specialist doctor from they do through AI they do the surgery and it's failed. So many things comes as strength is there, and sometimes the weakness means the negative error also there. Machine always do things from the couple of years, but sometimes it reflect the hurdles or people are getting lot of trouble. Yes, true. This is the very impact of
because finance, I'm having bank account. So AI is collecting data of many people, the bank accounts, right? Yes. Through the any kind of, Yeah. and they are sending a lot of information, and people are getting to a lot of hurdles to put their information. Okay, so AI is just destroying the Indian people the money through financial frauds. Yeah. And government has said out of the box is controlling it out of the system. There has been one cyber crime through the reporting 1930, but is failed now. Right. This is very, very negative impact of India for Indian investor or Indian bank holder. They are worried about how to protect their money in bank account every time because AI is trapped. Yes. This is the major challenges in this technology of throughout worldwide. True. How it can be protect the financial frauds during this, because some crores every time there are people the fraudulents are using the AI and trap people. How it can be solved to protect financial fraud in this industry today? Yes. So very rightly said, like AI can be used for good purposes, but some wrong people are using AI for wrong purposes. Like they are using AI to make frauds. They are using AI to like make phishing calls. To make so AI can do this thing. AI can do good thing and AI can do bad thing also. And AI can do good things better. AI can also do bad things better. So that's the challenge we are currently facing. As of now, how much AI is being integrated in banks. So first of all, banks need to make it assure that they need to make a contract with a good or reputed AI institution. Most of the time, to be honest, just for cost cutting, banks do prefer local AI, local models, or like there are no proper guidelines. They do not follow all the procedures. Just they deploy it in a hurry. But that's not the right phase. For if I say in the financial sector, I said right here money is involved, so it's very risky and very sentimental. So here we need to try and track and train the AI of all the transactions, all the frauds, all the scams that are happening. We have already trained, but after training, many new types of scams are coming because AI. No, the banks and all the financial technology, because there are some crores of turnover in stock Yes. exchange every Yeah. day, True. right? And banks are hiring the high paid, or our Security Exchange Board of India has Hmm. paid the good amount of money to hire AI, True. because that's a screen based trading is very because some crores money, a billionaire. Sometimes it's failed because it's not identifying the Yes. assessment of shares and stock, the value kind of thing to the investors. Investment. Huh. And bank, they're using their high value software. But apart from this, everyone knows, because who was present here, so many of people have already faced the cyber crimes. True. Yeah. It's happening continuously. So here, what we can do is. Out of the system, everyone is most of the top technologists trying, but they failed. Throughout worldwide, because cybercrime is happening any corner of world, no? Yeah. So when cybercrime happens, so we are no doubt we are like deploying our best AI models. We are making so much of research, but and we are deploying. But after deploying also, there are they are again they are using AI to find out loopholes. Like yeah, we can enter this gate in this way. So these new loopholes that we need to get fixed, like we need to test and train all the scenarios. We need not to be in a hurry. We should never hurry by implementing an AI. First of all, what we should do, already AI is implemented, it's okay. But if it's not working good, don't use AI now. Train it first. Make it like test it first. Don't deploy it in real life scenarios. You can deploy it as a side model that can manage some part first. Test it whether it's working or not. If it's working fine for not for months or years, whether it's like monitor it whether it's working fine for long period of time, then only use it rather than directly implementing it to all the customers at a time. That's what, as of now, what I can respond to this answer, because yeah, we are still in the development phase. AI is still learning, AI is still improving. Thank you, Shashwat. I think औषधिकारकाचे questions nahi, then we will conclude the session.
मैडम मोर गोटे क्वेश्चन देला बिल्कुल सर जल्दी कुहतु हेलो कुहतु हाँ सर जल्दी करंतु शाश्वत गोटे क्वेश्चन हाँ अच्छा शाश्वत एक्चुअली मोर झियो स्टैंडर्ड 7 रे पढुची से बिल्कुल। आईसीएसएस स्कूल रे तो एआई रे ताको कोन सपोर्टेबिलिटी पारबे केमते ट्यूटोरियल क्लास पाई बिल्कुल कोन ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଇସିଏସ୍ସି ରେ ପଢୁଛି ତ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଇସିଏସ୍ସି ରେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଲାଇକ୍ ମୁଁ ବି ଆଇସିଏସ୍ସି ରେ ପଢୁଛି ତ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଆଇସିଏସ୍ସି ରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଅଧିକ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଥାଏ ପାଖାପାଖି 11ଟା 13ଟା ନା କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ବେଳକୁ ତ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିଚର ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯିଏକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ ରାଇଟ୍ ସୋ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଜିନିଷ ୟା ଫିର୍ ତାକୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ତାକୁ କିଛି ଟପିକ୍ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ସେ ଯାଇକି ଏଆଇକୁ ପଚାରି ପାରିବ କି ଲାଇକ୍ ମୋତେ ମୁଁ ଏବେ 7th କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି ଆମର ଏ ବୁକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ବୁକ୍ରେ ଏଇ ଟପିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଏଇ ଆପଣ ଏଆଇ ବହୁତ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇଡ଼୍ ଭର୍ସନ୍ରେ ସିଏ ଜେନେରେଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେବ ଯେମିତି ସେ ଟେକ୍ସଟ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଥିଲା ସେମିତି ଦେଇଦେବ ସିଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏଆଇ थैंक यू ओके सो आउ जहार भी जहाँ क्वेश्चंस अच्छी आपण सब लिस्ट डाउन करंतु हमें शाश्वत को आउ थरे आनिबा आपनकर जहाँ भी क्वेरीज आंसर करिया पई सो इट वाज थैंक यू शाश्वत आसिया पई आउ ए सेशन नबा पई इट वाज एन आई ओपनिंग सेशन एंड इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल मु भाबुची समस्त किछि ना किछि गेन करथिबे हमें आम पर्सनल लाइफ रे प्रोफेशनल लाइफ रे केमिति एआई को यूज करि परिबा आम बेटरमेंट पई एंड आम प्रोफेशनली केमिति ग्रो करि परिबा प्रतिटी पॉइंट कवर हे जाई छी আজি आई एम श्योर समस्त बुझी पारथिबे एंड केमिति आपण चैट जीपीटी यूज करि परिबे एंड हमको को टाइप रा डेटा मिली परिबो सब जिंस कवर हे छी सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू शाश्वत एंड समस्तन को भी मु कहिबी थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड टिके क्यूरियस रहंतु जेमते शाश्वत कहले लर्न करंतु एंड टेक्नोलॉजी को हमको एम्ब्रेस करिबा पई ही पड़िबो एज ही सेड टेक्नोलॉजी एआई इज हियर टू स्टे तो हमको ताको केमिति हमें ताको यूज करिबा जहाले भी हमको करिया को ही पड़िबो वी कैन नॉट गो अवे विदाउट यूजिंग इट सो thank you Shashwat thank you again and Balakrishna sir अपन जदि किछ कहबे then we can conclude जने हैंड्स रेज करछंती एक्चुअली ट्रैवल मैडम okay sure thank you sir बिल्कुल सर वेलकम for your valuable time. okay thank you everyone we can leave now थैंक यू धन्यवाद जॉइन करबा पई राकेश सर आपण किसी पचारिबे आपण हैंड्स रेज करछंती सर जो आम क्रोम रु विभिन्न प्रकार फिल्म माने मूवी एबे आसुचे आम डाउनलोड करूचे बिल्कुल कि आम जो आम निजर फोटो को आम टिके ये से करूचे तो एटा के किछि हार्मफुल अछि कि ना आपण जो मूवी डाउनलोड कथा कहले सेटा तो एआई संगे किसी संबंध ना सेटा आपण क्रोम रु डाउनलोड करछंती तो से आपण टिके सतर्क हेबा दरकार कहीं ना एसब जिनस बेले बेले कौन हुए मूवी डाउनलोड हेबा बेले ता संगे किसी भाइरस भी आसी जाए तो से सब जिनस टिके सतर्क रहे एंड ता छड़ा बहुत सारा एप्स जोटा कि आपको दरकार नहीं सेटा भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए तो मु तो आपन को रेकमेंड करी कि लाइक जदि आपण को फोन रे सेते इंपोर्टेंट जिनस अच्छी तो से फोन रे करंतुनी जदि कहीं ना किसी मोमेंट को भी मोमेंट रे किसी भी पारे कहीं ना आम जानी पारिबोनी से जिनस आपको देखा जीवनी बट डाउनलोड मूवी संगे डाउनलोड होइकी सेटा आपन सिस्टम रे इंस्टॉल हो जिवो आकु जाकि धीरे धीरे सेटा आपन सिस्टम को लॉक कर देबो तो से जिनस बहुत सारा केस हेछि तो से सिस्टम से केस रे कौन हुए आपन को सिस्टम फोन या फिर लैपटॉप फॉर्मेट करबा को पड़े तो सेटा को टिके सतर्क रहिबे से जिनस विषय जतले आपन मूवी डाउनलोड करछंती थैंक यू सर वेलकम
ଆପଣମାନେ ଲିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ମୁଁ ଅଛି, ବର୍ନା ଲାଇକ୍ ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଚलो ଗୁଡ୍। ओके गाइस, बाय बाय, धन्यवाद।